हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टुडे आवर टॉपिक इज एटम्स। व्हाट इज एटम्स? मैं आपको आज बताऊंगा कि एटम्स क्या है, उसके बारे में सारा डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप जैसे मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप चकाचौंध हो जाएंगे कि वास्तव में क्या होता है एटम्स। हमारे चारों तरफ एक एक चीज़ जो बनी है वो सारी की सारी एटम से बनी होती है, और एटम्स है उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स पाए जाती है। इसके अलावा वो भी आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो से एंड तक ज़रूर बने रहना। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर सर्च किया व्हाट इज़ एटम्स। मेरे को भी थोड़ा जानना था कि एटम्स क्या है, तो मेरे को एटम्स के बारे में बहुत शानदार जानकारी मिली है। दोस्तों, वो शानदार जानकारी, गजब के जो फैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आपका प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड ऐसे ये वीडियो आगे लाता रहेगा, तो वीडियो को एंड से ज़रूर बने रहे। शो गाइज, यू कैन सी समथिंग अबाउट एटम्स। देखिए दोस्तों, आपके सामने किस प्रकार ये माइक्रोस्कोप के द्वारा एटम दिखाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा हम एटम्स को ओनली माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। हमारी नग्न आँखें हैं जो नॉर्मल आइज हैं उनके द्वारा अपन छीन नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी एटम्स है उसमें न्यूक्लियर होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो अपना कक्षक होता है, जो ऑर्बिटल्स है, उनमें सराउंडिंग करते हैं। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, बीच में एक बॉल की तरह एक जो दिख रहा है वो सेंटर है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आज हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, जिसमें एटम को एक कंटिन्यू कंडीशन दी गई है, कंटिन्यू जो सीटिंग दी गई है वो अलग अलग है। इसके अलावा दोस्तों, आप पीरियोडिक टेबल्स में देखते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पर आता है। इसका जो नंबर होता है वो 8 नंबर आता है। हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे कक्षा है उसमें सारे रो और कॉलम हैं, उसमें बच्चों को बिठाया जाता है। उसी कंडीशन में साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक पीरियोडिक टेबल तैयार की, जिसके द्वारा हम एटम्स को आसानी से पहचान सके, आसानी से जान सके, और हमारे लिए एटम्स के बारे में जानना इजी हो सके। इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एटम्स से बनी न हो। ऑल जो मटेरियल है वो सारी एटम्स से बनी होती हैं। जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद पता चला कि वास्तव में मैं आपको किस प्रकार एक्सप्लेन करूं कि एटम्स क्या है। वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका साइंस के प्रति जो इंटरेस्ट है वो इतना बढ़ जाएगा दोस्तों कि आप साइंस के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो को आगे सुनिए कि किस प्रकार एटम्स है वो पाया जाता है। On that couch, and even that healthy snack you may be eating, believe it or not, all of those things are made up of atoms. In fact, everything in the world that you can see, touch, and even things you can't, such as air, are made up of tiny building blocks called atoms. Without these atoms, you would not exist, and neither would the things around you. Atoms are so small you can't see them, unimaginably small, but you can see, breathe, and touch the things made from atoms. Atoms make up the cells that are part of everybody's body, and the particles that make up every Atoms are tiny particles that are so small they're not possible to see with the naked eye, and are only possible barely to make out with the most powerful microscopes. Everything that exists in our universe is made up of atoms, including you, I, and the device you're watching this on. In fact, there are about 7 billion atoms in your body alone, which is 7 times 10 to the 27 atoms. But what is an atom? In this video we are going to look at what atoms are made of, and the mass and size of atoms, and the arrangement of electrons in an atom. Atoms may be tiny particles themselves, but they are made of even smaller particles called subatomic particles. Atoms consist of a central nucleus that contains protons and neutrons. Protons are positively charged, and neutrons have no charge. This makes the nucleus overall positively charged. Much like how the Sun has planets orbiting it, the nucleus has electrons orbiting.
electrons have a negative charge. Because electrons are negatively Elements they make up. Elements are the building blocks of molecules, and everything around us consists of molecules. All the elements are different, and there are 120 of them. These 120 elements are laid out here in the periodic table of elements. This chart is used by scientists, like physicists and chemists, to study how solids, gases, and liquids behave. It all depends on what they're made of. You'll probably spend a lot of time studying this chart later as you continue learning about science. This is the element oxygen. The number 8 means that the atoms that make up oxygen have 8 protons. This is helium, and its atoms have 2 protons. The number at the bottom tells us what the atomic weight of the element is. As you can see, there are 120 such elements on the periodic table, and each of those elements is made up of atoms. Think of it this way. Just as the letters in the word tell you what the word is, the number of protons, neutrons, and electrons that make up the atoms in an element tell you what the element is. And when atoms and elements are joined together, they make up molecules. Water, for example, is a molecule. Each water molecule is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, and is sometimes referred to as H2O. It takes 2 atoms of 1 hydrogen and 1 atom of oxygen to make water. As we said, atoms are super tiny, and therefore the molecules they create are also really, really small and can't be seen without a special microscope. Think about it. Can you see a single molecule of water? No way! Even the smallest drop of water is made up of many molecules, and within those molecules are even tinier atoms of hydrogen and oxygen. Some elements are actually made up of a single atom that doesn't attach itself.